Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session, as part of which आज हम लोग करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस. उसमें टॉपिक है वेजेस, जिसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है, एंड इन दिस सेशन विल बी डूइंग पार्ट 2. Now, why is this series important? When it comes to the number of questions that are asked from labor laws and industrial relations in the UPSC EPFO exam, be it APFC, दो पोस्ट के लिए है ना, जो APFC है, या A और EO के लिए, दोनों के लिए भी out of 120 questions 15 plus questions इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं, लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाई वेटेज कितना है इनका. एंड मोर ओवर, अगर आप बेसिक्स भी बहुत सही से कर लोगे इन टॉपिक्स का, यू विल बी एबल टू आंसर 10 प्लस, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. ओके, बहुत इजीली. सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वेटेज दैट इट कैरीज नाउ. सो these topics are very important, and in order, if you want to score more, you can go through these sessions regularly, so that आप जो भी content हम इसमें पढ़ा रहे हैं, that you can utilize for your preparation. And also we are doing that in the form of MCQs, so आपका एक रिविजन भी हो जाएगा एंड प्रिपरेशन भी हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ. सो एंड ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन ऑफ UPSC EPFO 2025 वेरी सून. सो I suggest you to utilize these sessions as part of your exam preparation. So without wasting much time, let's start today's session. So here comes the first question. Which article of the Indian Constitution mandates the state to ensure equal pay for equal work for both men and women? अगर ये देखा जाए तो this is article 39 that says that article 39 says that men या women दोनों के लिए equal pay होना चाहिए. Okay, one second. Yes, okay, article 39 है. And there is one act also, the Equal Remuneration Act 1976, which gives effect to this constitutional provision, that is article 39. ठीक है, so here C is the correct answer. Moving on to our next question. Under the Plantations Labour Act 1951, an employer is required to provide suitable rooms for children of women workers if the number of women workers employed is at least, okay, अगर number of women employers इससे ज़्यादा है तो definitely they have to provide with suitable rooms for the children of women workers. अगर children and women मिलके greater than 20 होंगे, then also it's the same, but otherwise women workers जहाँ पे भी 50 plus है, then they have to go for provision of suitable rooms. अगर children and women मिलके 20 plus है, even then in either of the cases they have to provide suitable rooms for the children. So here B is the correct answer. Moving on to our next question. There are various theory of wages, किस तरह से देना है. So here, which of the following situations best illustrates the subsistence theory of wages? Now what is this subsistence theory? ये propose किया था डेविड रिकार्डो ने. Now it states that the price of the labor, that is the wages, the जो labor के लिए pay करना है, that would be depends on the कि कितना उसको मतलब जीने के लिए चाहिए, subsistence अभी के लिए. Subsistence itself means बस अभी जीने के लिए चाहिए. So that much they have, उतना minimum wage उनको pay करना चाहिए. Okay, that should be the wage. Actually ये अभी completely outdated है, क्योंकि सिर्फ वो wage नहीं, वो bread earner है family के लिए, तो उनकी family का भी हमें देखना पड़ेगा. That also has to be counted into. तो कई सारी चीज़ें. So this is completely outdated now. So here in this case, when we look at the various theories or the situations that have been mentioned here as options, उसमें सबसे ज़्यादा ये developing nation sets a minimum wage that only covers basic necessities leading to fluctuations in workforce participation based on wage levels. ये सबसे जो situation है जो subsistence theory के बहुत करीब दिख रहा है. So here B is the correct answer. बाकी भी देख लेते एक बार. country implements universal basic income program, ये सब citizens के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए है. So this is no. A multinational corporation increases wages significantly, no. A strong trade union negotiates higher wages and benefits, improving job, ये भी नहीं. So this is the one, the situation that best suits with the subsistence theory of wages.
Now comes the next question. Which of the following scenarios best reflects the wages fund theory? Now ये क्या है? This theory was proposed by J.S. Mill and इसमें majorly क्या बोलते हैं कि जनरली इफ वी हैव ए फंड जहाँ पे वेजेस उसमें से पे करते हैं, सो ऑब्वियसली वो एक फिक्स्ड अमाउंट है, राइट. सो उस फंड में से व्हेन वी आर पेइंग वेजेस फॉर वेरियस कंपोनेंट्स, अगर हम एक कंपोनेंट का वेज अगर इंक्रीज करना है, सो व्हाट विल हैपन, इट विल इम्पैक्ट द अदर सेक्टर. वहाँ के वेज कम करेंगे बिकॉज ये तो फिक्स्ड कंपोनेंट है जिस फंड से हम लोग मनी ले रहे हैं. सो दैट काइंड ऑफ थियरी, ये जनरली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जहाँ पे कैपिटल की कमी है या इन्वेस्टमेंट की कमी है, देर दिस थियरी इज फॉलोड. अदरवाइज ये भी आउटडेटेड ही है. एंड अगर सारे ऑप्शंस देखेंगे तो हियर अ कंट्री विथ लिमिटेड कैपिटल सीज वेज इंक्रीज इन वन सेक्टर but due to trade unions efforts, but wages in other sectors decline as a result of this fixed wage fund. ये बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है. ये सी इज द करेक्ट आंसर हियर. बाकी भी देख लेते. गवर्नमेंट इंक्रीज द मिनिमम वेज अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, नहीं. हायर एम्प्लॉयमेंट रेट्स, ये नहीं. अ कंपनी raises wages for its employees by reinvesting its profit, no, because ये फिक्स्ड फंड है. अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक्सपेंड्स ऑपरेशंस क्रिएटिंग न्यू जॉब्स इंक्रीजिंग वेज लेवल्स, नहीं, ये भी नहीं. ये सबसे सही सिनेरियो है जो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है. सो सी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. Which of the following scenarios best illustrates the purchasing power parity theory in action? See, what is purchasing power parity theory, कीन्स ने इसको कंसिडर किया था. डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट फ्रॉम ए मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू. सो इसमें क्या है, एज अगर फॉर एग्जाम्पल वेज रेट्स इंक्रीज किया है, सो ऑब्वियसली द परचेजिंग पावर ऑफ द लेबर विल इंक्रीज. नाउ जब वो इंक्रीज हुआ है उसका मतलब डिमांड इंक्रीज हो रहा है. नाउ डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली सप्लाई को भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा. नाउ सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा मतलब ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी. अगर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ा मतलब मोर पीपल टू बी एम्प्लॉयड. ओके, अगेन इट्स अ सर्कल दैट गोस ऑन. अगर वही उन्होंने कम सैलरी कम कर दिया मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी कम हो जाएगा, उनका जो खरीदने का जो है, उससे क्या है, डिमांड कम हो जाएगा, फिर सप्लाई कम हो जाएगा. सो ऑल again impacted in both the ways. So in this case जो scenarios है ये बहुत सबसे सही फिट बैठता है. गवर्नमेंट reduces the minimum wage leading to decrease the consumer spending and lower overall the demand in the country. सो उस तरह से ये सही है. ए इज द करेक्ट आंसर. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. कंट्री इंप्लीमेंट्स टैक्स कट्स फॉर हायर इनकम अर्नर्स इंक्रीजिंग देयर सेविंग्स बट हैविंग मिनिमल इम्पैक्ट. नो, ये इम्पैक्ट करता है डिमांड को, सप्लाई डिमांड को. ए कंपनी ऑटोमेट्स प्रोडक्शन रिड्यूसिंग इट वर्कफोर्स बट द प्राइसेस ऑफ गुड्स रिमेन अनचेंज्ड. A nation devalues its currency making imports expensive but domestic production remains unaffected. इससे भी कुछ वो नहीं है. That is not impacting the power parity of a labor or the people. So here A is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following scenarios best reflects the residual claimant theory of wages? The name itself suggests residual क्लेम करना है एज ए सैलरी और द वेजेस. दिस वाज गिवन प्रपोज बाय वॉकर. इसमें क्या है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, सो व्हाट दिस थियरी सेज दैट किस तरह से वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है. सबसे पहले जो उसका रेंट है या फिर बाकी जो भी खर्चे हैं, इंटरेस्ट है, ओवरड्यू हेड्स, ऑल दैट दे हैव टू फुलफिल, एंड जो भी बच रहा है दैट हैज टू बी पेड एज वेजेस. ओके, सो दिस इज व्हाट द थियरी सेज. एक्चुअली कई सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं ये भी एक सही तरीका है बिकॉज उससे वॉट एवर द लेफ्ट दैट विल बी पेड टू द मैन. मोर ओवर अगर एफिशिएंसी बढ़ेगा तो उनको ज़्यादा मिलेगा, एक मोटिवेशन फैक्टर आ जाएगा वहाँ पे. सो हियर दिस इज व्हाट दिस थियरी सेज. सो यहाँ पे जितने भी सिचुएशन है, लेट्स सी ए कंपनी पेज फिक्स्ड सैलरीज नहीं होते यहाँ पे. A business distributes wages to workers only after covering rent, interest payments and shareholders' profits. Yes, this is very much true. Okay, and a government sets minimum wage ensuring no the base salary होता नहीं है. So an employer increases wages based on the industry standards rather than company earnings. No, so as and when company के earnings बढ़ रहे हैं या फिर efficiency बढ़ रहा है, obviously that will automatically add all that to the wages. So here B is the correct answer.
So moving on to our next question. Which of the following scenarios best illustrates the marginal productivity theory of wages? Now this was associated और जिन्होंने इसको प्रोफाउंड किया था दैट इज जॉन बेट्स क्लार्क, उन्होंने इसको इस थियरी को प्रोफाउंड किया था एंड उसके बाद लेटर इट वाज डेवलप्ड बाय मार्शल, जेवॉन्स, वालेस, वेरियस इकोनॉमिस्ट दे हैव एडेड देयर कंट्रीब्यूशन टू दिस एंड फाइनली अभी जो डिस्कस करने वाले हैं दैट हैज बीन अराइव्ड एट. नाउ एज पर दिस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी, जो लेबर का डिमांड है दैट इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट हैज बीन जनरेटेड बाय द एडिशनल वर्कर. सो जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो डेवलप हो रहा दैट इज एडिशनल एम्प्लॉयर या एडिशनल वर्कर से जो भी जनरेट हो रहा है, okay, that based on that extra output only the wages for that person would be decided. Okay, so where others all other factors of production being constant, only the unit of labor जो भी increase हो रहा है उसके accordingly the wages would be paid. Okay, so here जो हम लोग यहाँ पे situations देख रहे हैं, let's look at this. A company increases all employees' salaries equally regardless of their productivity. No. A factory hires an additional worker and pays them based on the extra output they generate. This is very much true for this. Marginal product, जितना वो additional, जैसे marginal productivity का एक economics में एक theory है ना, उसी के basis पे as on when we keep adding जो भी उसका output मिलेगा, for that only they'll be providing the wages. A government mandated minimum wages business to pay fixed salaries to workers. No. A firm decides to pay higher wages to employees based on the years of experience rather than their output. No, ये भी नहीं है. So here in this case for marginal productivity of theory, this is the best option, that is B. Which of the following scenarios best illustrates the bargaining theory of wages? Now bargaining theory of wages ने propose किया था जॉन डेविडसन ने. Now what does this say here? This theory says that the wage determination is based on the negotiation skills among the जो यूनियन है and the management. दोनों को चाहिए कि जो प्रॉफिट्स मिले हैं उसमें सबसे बड़ा शेयर मिले, बट अगेन बोथ ऑफ दे नो कि अगर यूनियन स्ट्राइक पे गई तो मैनेजमेंट को कितना नुकसान होगा, यूनियन को भी ये भी पता है कि अगर यूनियन खुद स्ट्राइक पे गई तो उनको कितना नुकसान होगा. सो बेस्ड ऑन ऑल दिस कीपिंग एवरीथिंग इन व्यू, जब वो डिस्कस करके नेगोशिएट करके व्हेन दे फाइनली अराइव एट सम फाइनल पे, यू नो, such kind of wage determination is that falls under bargaining theory of wages. So here एक बार options देख लेते हैं. A company sets fixed wages without any negotiations. No. A government agency enforces uniform wage structure across industry. यहाँ पे भी negotiations तो हो ही नहीं रहे. No. A labor union negotiates with management for higher wages and the final pay is determined based on the bargaining power of both the sides. Yes, this is very much true. Okay, an employer pays wages solely based on the employee's education qualification without considering negotiations. ये भी नहीं है. So here this theory says that जिसका जितना bargaining power होगा उतना वो उसके हिसाब से wages decide होंगे. So here C is the correct answer. Coming to the next question, which of the following scenarios best illustrates the efficiency wage theory? Actually एक hypothesis भी माना जाता है and the term efficiency wages it was coined by the noted economist Alfred Marshall, उन्होंने coin किया था. Now what does this say? Now this says that when अगर आप जब भी irrespective of the profits and all that you are earning, अगर आप हायर जो मार्केट इंडस्ट्री का जो एवरेज सैलरी से उससे ज़्यादा अगर पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, डेफिनेटली दैट वुड ऐड टू देयर मोटिवेशन एंड देयर बाय दे विल कंट्रीब्यूट मोर टू द ऑर्गेनाइजेशन. देयर बाय जितना आप लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे. ओके, सो ऑल दिस बॉइल्स डाउन टू द मोटिवेशन एंड ऑल दैट. एंड ये एक थियरी है जो से दैट एक्चुअली majority of the जो economists बोलते हैं this is one of the best actually. Okay, but still again first they have to invest, वो wages वो सब देना. So here इससे क्या होता है, एक तो absenteeism कम हो जाएगा, हाईली स्किल्ड लेबर भी आने लगेगा क्योंकि यहाँ तो इंडस्ट्री एवरेज से अच्छी सैलरीज मिल रहे करके, एंड दैट ऑल विल लीड टू द
overall improvement in the efficiency of that organization. So here let's see क्या क्या है. A company pays minimum wages to all to maximize benefits. No. A company pays wages solely based on the year's experience without considering the performance. No. A business reduces wages to cut costs leading to higher employment. No. A firm offers higher than average salaries to its workers to boost motivation, productivity, etc. Yes, क्योंकि based on their experience, based on their work, all that they'll consider, and moreover एक morale बढ़ाने के लिए they give this. So here D is the correct option in this case. Moving on to our next question. Which of the following scenarios best illustrates the demand and supply theory of wages? The title itself suggests कि जिस पोस्ट का और जिस स्किल अगर डिमांड में है तो ऑब्वियसली अगर उसका सप्लाई कम है तो ज़्यादा सैलरी देके हम लोग करते हैं, राइट? अगर लेकिन ये जनरली टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब बात है, अभी एआई एंड मशीन लर्निंग का बहुत आ रहा है. सो अभी कई सारे एड्स भी आपको देखने को मिल रहे होंगे कि जिसका एआई में अच्छे से नॉलेज है एंड दे नो हाउ टू यूज दैट एंड ऑल दैट, दे आर एबल टू गेट गुड सैलरीज बिकॉज उनका अभी सप्लाई कम है मार्केट में. वी आर स्टिल पीपल आर स्टिल अपडेटिंग देयर स्किल्स, राइट? सो वही अगर स्पेशली अनस्किल्ड वाले हैं, सो ऑलरेडी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड अभी कम है उनके लिए, सो ऑब्वियसली उनके जो वेजेस है वो कम हो सकते हैं. सो ऑल दिस जो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है एंड एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ वर्कफोर्स एट डिस्पोजल, ये सब डिपेंड करता है. सो हियर इन दिस केस अ बिजनेस like a company increases wages for software developers due to rising demand for tech skills, ये बिल्कुल ट्रू है. A government sets fixed minimum wages regardless of market conditions, ये नहीं है. An employer pays workers the same wage every year ignoring market fluctuations, नहीं. they have to play, जैसे वहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है तो obviously in order to retain them, okay, they have to. So a business offers salaries based on own seniority without considering labor market trends. No, ये ट्रेंड्स के हिसाब से चलता है, स्किल्स के हिसाब से चलता है, अभी मार्केट में किस तरह से. So here A is the correct answer. Yes. Moving on to our next question. The National Policy on Child Labour 1987 introduced a three-pronged strategy to combat child labour in India. Which of the following is not one of its key approaches? So एक बार देख लेते. Legislative action to prohibit child labor in hazardous conditions. Yes, this is very much true क्योंकि जो Child Labor Prohibition and Regulation Act है 1986, it prohibits the engagement of children below 14 years in 18 occupations and 65 processes, and also to regulate the conditions of work of children, and children मतलब young age 15 and to 18 years वालों को मैं बता रही हूँ यहाँ पे. So that they have done. So this is very much true. Legislative action इन्होंने लिया है and as part of that जो अभी मैंने act बताया है that they have implemented. Developmental programs aimed at rehabilitating child laborers and providing alternate livelihoods. Yes, this is also they have been doing. जहाँ पे भी child labor जब they get, definitely they look into this. Awareness campaigns to sensitize society on the ill effects of child labor. Okay, ये भी ये लोग कर रहे हैं. Along with that कई सारे constitutional उनको provisions है, like your article 21A, right to education, जो free education देता है for all those children between 6 to 14 years. Okay, so that वो labor में जाने से पहले they can go for education and determined by the law. Article 24 बोलता है कि it prohibits employment of children below the age of 14 in any factory or mine or any hazardous occupation. ये एक इन्होंने प्रोविजन दिया है. तो तीसरा है आर्टिकल 39E states that the health and strength of the workers, men and women, and the tender age children are not to be abused and they should not be forced in any economic necessity so that उसकी वजह से जो जॉब करना पड़े या फिर कुछ काम करना पड़े. So all these provisions have been made already. Okay.
नेक्स्ट आता है फोकस ऑन यूनिवर्सलाइजिंग हायर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ लेबरर्स अबव 14 ईयर्स ऑफ, ये नहीं है, 6 to 14 ईयर्स तक एजुकेशन का है फ्री, सो वो है। एंड अबव दैट जो अभी हमने डिफरेंट आर्टिकल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट एक्ट्स जो बीइंग इम्प्लीमेंटेड है बिकॉज टू प्रमोट दिस बिल्कुल कॉम्बैटिंग चाइल्ड लेबर, ये सब कर रहे हैं। सो हियर ऑल दीज आर देयर बट दिस इज नॉट हियर, सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर। Moving on to our next question, how does Article 21A of the Indian Constitution contribute to the prevention of the child labor? अभी हमने डिस्कस किया था in the last question की किस तरह से they are doing, right? हमने ऑप्शंस में सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट्स दिए थे कि they are doing this, they are doing that. How they are doing that we have already discussed. As part of which हमने Article 21A भी देखा था. How they are doing? By mandating free and compulsory education for children aged 6 to 14 years, reducing their engagement in labor. So here A is the correct answer. So moving on to our next question. Which commission was the first to recommend the setting up of a wage board in India? See, 1931 में एक कमीशन आया था, commission on the labor, and they are the ones, this commission was for the first time they recommended for setting up of a wage board, and that commission is none other than Whitley Commission on Labor, and उनका recommendation आने के बाद yes government has looked into that, but कब ये मेटीरियलाइज हुआ है? ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year प्लान सबसे पहला वेज बोर्ड हमने इस्टेब्लिश किया है, वो क्या है हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट वेज बोर्ड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड फॉर व्हाट इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट वेज बोर्ड सेट अप? सो द फर्स्ट वेज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1957, दो फर्स्ट 5-year प्लान में ही ये डिस्कस हुआ था एंड ऑल दैट, बट वो सब होते होते 1957 में हुआ था, एंड इट वाज फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड इसका नाम उस टाइम पे दिया गया था सेंट्रल वेज बोर्ड। ओके, सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर। Moving on to our next question, consider the following statements regarding the structure and appointment process of a wage board in India. Let's have look at the statements. A wage board is a tripartite in structure consisting of a chairperson, representative of employers and employees, and 2 independent members. Yes, this is very much to इसी तरह से रहता है. The chairman and the wage board is appointed by the appropriate government in consultation with the Chief Justice of the High Court concerned or the Supreme Court of India. ये भी true है. A member of parliament is mandatorily nominated to represent consumers on the wage board. No, ये mandatory नहीं है. Okay, जहाँ पे भी requirement है, only then they look into that. So here only 1 and 2 are the correct options. So here 1 and 2, that is A is the correct answer. So I hope you really liked the session. Before winding up, a small announcement. EduTap is currently offering various courses, especially for all those who are preparing for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, be it APFC or EO or AO. So इसमें 3 तरह के courses majorly they have launched. One है master course जो 1 point source होगा आपके लिए हर सब्जेक्ट, हर कंटेंट के लिए, इन द फॉर्म ऑफ PDF, वीडियोस, चैप्टर क्विजेस, एवरीथिंग, एंड अलॉन्ग विद दैट एवरी थर्सडे कुलदीप सर एक स्ट्रैटेजी सेशन लेंगे to guide you on how to utilize that enormous content that has been provided as part of this course. Along with that जो भी आपके क्वेरीज है वो सब रिजॉल्व करेंगे. दूसरा है दूसरा है टेस्ट सीरीज प्लस है, ये उन बच्चों के लिए है जो मेजरली दे आर लुकिंग आउट फॉर एक सिंगल सब्जेक्ट एंड कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए हमें, बाकी सब्जेक्ट्स हम पढ़ लेंगे, उस तरह के बच्चों के लिए है ये. ओके, एंड तीसरा है टेस्ट सीरीज, मतलब ये ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी एक बार एग्जाम दिया होगा या फिर कंप्लीटली अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट दे नीड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर प्रिपरेशन और रियल एग्जाम फेल होने के लिए कुछ मॉक टेस्ट टाइप का. फॉर दैट दे कैन गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज. सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन. अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द टीम मेंबर्स. बाकी सब डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है.
Okay, and with this I'm winding up this session. Thank you very much for being with me so patiently. Thanks a lot and all the best. See you all in the next session very soon. Thank you.